15, 16. That's a nice haul. ये बता फाइल डेस्टिनेशन देखिए। क्या हुआ? फाइल डेस्टिनेशन देखिए आपने? वो तो ठीक है। अरे न्यू मूवी आई है, बहुत बढ़िया है भाई। क्या मर्डर थे, क्या मतलब क्या डेथ्स थी, इतनी प्यारी प्यारी डेथ्स, मजा आ गया देख के। Add Astro. फुल गोर था। और सबसे सबसे अच्छी बात क्या थी, सब मर जाते हैं, कोई नहीं बचता। उसमें अच्छा क्या है भाई? अरे सब मर जाते हैं, और क्या चाहिए। दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम अ मूवी। इंटरेस्टिंग। Everyone dies in the end. कोई ना, होता है, सब होता है, चलता रहता है ये सब। मस्ट वॉच मूवी, अब पूरा देखना वो। और नहीं देखा तो हैं? देख लेना एक बार, मजा आएगा आपको। अपने टाइप की मूवी है, मैं तो इसलिए बोल इंटरेस्टेड रहा हूँ। नहीं हूँ भाई। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे खुद के टाइप में भी। अबे मजा आएगा, इतनी अच्छी अच्छी डेथ्स आपको कहाँ देखने मिलेंगी, बता खुद बताओ। अबे अबे मैं बर्फ में फंस गया, खुद बर्फ बनाए खुद इसमें फंस गया वो। ओए अच्छा, जैसा हमेशा बहुत अच्छी होती है। Error. तो मस्त है हमारे बात, इसलिए मुझे ले जाओ। उसमें ज़्यादा है ना, एक्सपेरिमेंट सामान का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया पेड़। अच्छा ये फ्लावर्स कहाँ हैं? ओ बड़ी, मरना है नहीं, नहीं मरना, जीना चाहता है, मजे नहीं दूंगा। वैसे तू जाकर नोनल को अपग्रेड कर सकता था बे, तूने किया नहीं है, स्टॉकेट है तू। तुझे C3 या C4 कर सकता था, वो कैसे कर अपग्रेड सकता करना था, था। स्टैंडर्ड बैनर में जो स्पिन होता है ना, कैसे कर उसमें सकता था। 20 में गारंटेड नोनल मिलती है 20 स्पिन के बाद। और 20 स्पिन तो कर ही सकता था तू नॉर्मल वाले, वो तो उतने तो मिले ही होंगे हर किसी को। मेरे को नहीं करनी वो यूज, मैं अभी इसको मजबूरी का यूज कर रहा हूँ। पता नहीं तो यूज़ करता है बहुत, इसलिए बोला मैं तो। अरे आप इनवाइट मार रहे हो, रुको एक सेकंड रुको, कमीशन कर रहा हूँ अभी तो मैं। अरे मैं उसकी जगह वो से कर रहा हूँ, प्लेयर क्या नाम है उसका, कुछ नहीं कुछ नहीं, वो हो जाएगा, फिर मैं रोलिंग छोड़ दूंगा, तो हीलर करूंगा मैं, कोई ट्राई ना करने का। मरे सारे, टेलीपोर्ट अनलॉक कर रहा हूँ अभी तो, और कमीशन कर रहा हूँ, जो करना कर लो मेरे वर्ल्ड में, हाँ, मेरे वर्ल्ड में जो करना है कर लेना। ऊपर क्या जाता है आपको पता है? कहाँ पे ऊपर कैसे आ गए? ऊपर आइडिया है, पता नहीं। मेरे सर के ऊपर देखो।
ये उसके ऊपर कैसे जाना है इनके ऊपर? मैं कभी गया नहीं तो मुझे नहीं पता। मैं तो कमीशन कर देता लास्ट बार। मैं जीतना नहीं चाहता हूँ, थोड़ा कोई कोई दिखाए उससे अच्छा है। वहाँ मैं गया नहीं हूँ कभी। वो पर वो तो बोल रहा था पड़ी अभी तो। उनको मारना बस। अबे यार भूल गया बैठ जाओ। बस मैं खेलने ले गया। क्या हो रहा है? दोबारा देखो। ये गलत है। इसी आप मेरी हेल्प नहीं कर रहे हो। हाँ इसलिए मेरे भूल गया। आप मेरी हेल्प नहीं कर रहे इसलिए मेरे पास लोग रखते हैं। क्या हुआ? आप मेरी हेल्प नहीं कर रहे इसलिए मेरे पास लोग रखते हैं। मेरे को क्या क्या ना कर रहे पड़ेगा। हो तुम? पता नहीं मॉन्स्टर मार रहा था। और मैं फूड यूज नहीं करना चाहता। फीलिंग के नॉलेज यूज करता हूँ सिर्फ। मैं कैरेक्टर अपग्रेड करना है ये सिवियर, उसके लिए मुझको फूल चाहिए। ओके। मैं वो ले रहा हूँ। बाद में खाऊंगा मैं। इधर को क्या करना चाहिए? मैं तो पता मेरे नहीं पास भाई सारी इसका लोग। जो कैरेक्टर अपग्रेड कर रहा हूँ ना मैं, इसको कुछ मटेरियल इलेक्ट्रिक का हाँ चाहिए, कुछ उसका चाहिए पायरो का, हाँ। और फ्लावर्स चाहिए अपने इसके वाटर वाले एरिया के। अजीब ही है भाई। बढ़िया। बढ़िया कैरेक्टर है। We want everything. अगर उसको मेरा चाहिए तो कोई भी। वो मैं तो दे नहीं चाहिए, दूंगा। वो इतना मुझे पता है। अरे सब भी चाहिए हो तो मैं दे दूंगा मैं क्या। हाँ नो नहीं चाहिए। अरे पूछ तो लेकर उससे क्या चाहिए। है कहाँ पे जाके तीन फूल है? तीन फूल क्यों से ज़्यादा लगा भाई? पानी वानी खाने के लिए आपको क्या चाहिए उस जगह से? लिटरली भाई एक एरिया में 12 फूल भाई। चाहिए कितने आपको? ओ मेरा काम हो गया। मैं कहाँ पे है तुम? लेयर इधर 1। से मैं तो कमीशन कर दूंगा। मैं जैसा भी हूँ। और इसमें क्या लंबे क्या लगते चेंज हैं। करना पड़ेगा मेरे को? इम्यून है तो बिल्ड के। ओके पार्टी पे क्लिक किया, कैरेक्टर से हुआ, वो क्यों नहीं हुआ भाई? अब हुआ।
I just want to see one thing. What the heck? मैंने क्या सुना अभी? अगर आपके इधर पे कोई बंदा हो तो एम क्या बोलते, फ्रीज नहीं होते? क्या हुआ? तो बैग पे जाते, अगर बैग पे जाते बस पाउच होते हैं ना हम एनिमी, बैग पे जाते ही और कोई बंदा हो इधर पे गेम में आगे में तो नहीं होते, है ना? पता नहीं मुझे किस चीज़ का असर कर। ओके जल्दी मेरे हेल्प कर दो, मारो जल्दी। मेरे अटैक टीम में है सारे, पता नहीं क्यों। Justice will prevail. Propagate! Spring forth! Scatter! No, life ruined everything. थैंक यू। भाई ये लिटरली मतलब मेरे को वाटर वाली फायर की मून क्यों है, क्या रीजन है सर? थैंक्स। नेक्स्ट मुझको डैमेज टेस्ट करने के लिए कुछ तो वो चाहिए भाई, टेस्ट सब्जेक्ट चाहिए। टेस्ट पेपर को मैं दिलाता आपको टेस्ट सब्जेक्ट, आज मेरे पास ये रहे ना, तो इनका चेक कर देता है। तो मेरे पास आओ, मैं तो बड़ी टेस्ट सब्जेक्ट, यही से बोलते टेस्ट सब्जेक्ट। ये मैंने तक नहीं किया, वहाँ पे गया तो। हाँ इधर पे आना, मैं मॉन्स्टर तक होके आया। मॉन्स्टर हो गया तब तक, ठीक है। आ रहा है मेरे पीछे आना। I will show you the real boss. हाँ है तो। मेरे पीछे आओ इधर पे। I will show you the test. ये फुल कर दिया देखो मैंने। रेनबो रोड। कर दो ना रेडी। क्या कर रहा है तुम? उससे क्या बात कर रहा More है? data samples, the better. रुको सही, क्या किया तूने? आ जाओ। इनसे फाइट करते हैं? Final warning. मुझे तो लगा ऐसे डांस करते हैं भाई। Ringblade. पावरफुल है ये, Racing. You पावरफुल है ये। Scatter! कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, पर मेरे को डैमेज हो रहा है बहुत ज़्यादा। पर उन पे मेरा वो काम ही नहीं कर रहा फायरों का। फायरों का नहीं कर रहे थे इतना। अरे वो तेरा अल्टीमेट है, नॉर्मल अल्टीमेट गन वाला काम नहीं कर रहा मेरा। इसमें टेस्ट काम कर रहा है। अच्छा रुको, मैं हील कर दूँ। आपको करना बस। Scatter! मर गई, मर गया। अब हीलिंग वाला नंबर है कोई? क्या कौन है तेरे को? Drop your weapons. और जो रहा वो भी मेरे को भी इतना नहीं कर सकता। तो फाइट नहीं कर रहा तो मैं अंदर जाके। Final warning. पार्टी हो जा। आप कौन सा पता फाइट करते हैं? Propagate! आप कौन सा पता फाइट करते हैं? नहीं मैंने वो नहीं पता भाई फाइट करता है। मैं तो उनका सिर्फ डांस देख रहा था। 1 घंटे तक बैठ के उनका डांस देखा था। As a dutiful maid. अरे यार, ये फाइट बड़ी फाइट करते हैं ये। Drop your weapons. Spring forth! Just a roll. Propagate!
नॉर्मल पकड़ कर बिना बैलेंस पर परमानेंट है यार बैलेंस Steady पर as हम कभी पकड़ कर सकते Final warning. Justice will prevail. Propagate! सही बात Germinate! Stand down. करो ना I must leave no stone unturned. Drop your weapons. आदत की है मेरा फुल एचपी सारे कर सकता ये ऊपर से पत्थर नहीं पिटा है मुझे नो आईडिया Healing blade. पता नहीं फिट Stop होगा right there. Leave it alone. साढ़े तक निकल जाना पड़ेगा Time to clean up. पक कर दिया पक कर दिया Hands where I can see 'em. इसका हमारा ये क्या दी इसका मैं समझ पता है वो बोल गया Propagate! मेरा ट्रैवलर का भाई 17,000 एचपी अभी और इसका I must leave no stone यार कैसे unturned. मैं 10,000 ट्रैवल का मुझे जाना कैसे जाना तूने उसका वो नहीं कर रखे होंगे ना तेरे अलग अलग उसका भी तो फर्क पड़ता है मेरा डेंड्रो का वो बात करके डेंड्रो के लगे हुए हैं कौन से उसको कॉन्ट्रैक्ट Final warning. Scatter! मैं अभी इससे निकालूंगा थोड़ा दिन वही करूँ निकालेगा Justice will prevail. बस तेरी साथ तक लगा रहा था क्या कर रहा था Spring forth! कल निकाल रहे थे मैं क्यों 2 अटैक पे लगा भाई सर कोई बढ़िया नहीं अब लगेगा डैमेज जियो तभी लाता हूँ जियो मैं लड़ा नहीं बड़ा तुमको बता नहीं मैं फर्स्ट टाइम करता हूँ पर बस कितना मतलब फाइट करता है फर्स्ट टाइम करता पहले है भाई फाइट करने का लड़की का तेरे भाई गोली मार दी सीधा अमेरिकन वे नहीं खाने का भाई यूज करता है हाँ पता है ये बोला था अमेरिकन वे लग गया मेरे को अब मेरा Germinate! अब हो जाएगा लेकिन Ha! Stop right there. Hands where I can see 'em. Propagate! Scatter! अब मैं आपको 10 के एचपी पे आ गया भैया भी 1000 लिटरली अभी तक तो मैं 13 के Scatter! और विदाउट गिल्ड रहा हूँ पता है गिल्डर भी नहीं है मेरे पास ये मेरे क्या मैं तो ज्यादा डैमेज से कर Drop your weapons. वो भी अच्छा है बढ़िया है Scatter! मेरे दोनों कैरेक्टर का 14,000 अबव एचपी अभी अब खत्म है Propagate! You asked for it. बोला ना मार लो बेटा मैं बंद My honor to serve you. तू मर गया नहीं मेरा एक एक्टर मर कैसे गया बे पासवर्ड भी नहीं है बहुत Drop your weapons. ये ड्रॉप क्या करता है पावर क्लेम करने लायक रिकॉर्ड है जो राइजिंग यूज करूं मैं इस पे क्या दो मेरे को नहीं पता हाँ क्या मिला तेरे को
अभी तो मैं देख रहा हूँ उसके क्या क्या रिवॉर्ड है। करना क्लेम। तू कर, फिर मैं देखता हूँ क्या करते हैं। किया तूने? हाँ मत नहीं है, कर लिया। क्या मिला? वो हाँ? Let वो me see. मिला। What will I get? तेरा वर्ड लेवल क्या है? सेम एज यू। Oh, Feastos are just the चल ठीक है, best यूज कर ही snack. दिया मैंने। They're easy. मेरे को 5 क्या स्टार मिला? आर्टिफैक्ट मिला एचपी का। भाई आप कितने लकी हो। सिग्मा लेवल पे आ रहा पर भाई। सब कुछ सेम है, सिर्फ आपका लक अच्छा है। मैं पहले वाले पर तो क्या था इस तरह। स्ट्रीम पे एक बार मैं स्ट्रीम पे जा, मैं तेको आर्टिफैक्ट दिखाता है, मेरे पास अभी कितने हैं करंट पे। और इसको जा इसको वो फायर वाला था ना, फायर वाला कहाँ गया? ये रहा। इस पे क्या है? वैसे न्यू फोन बढ़िया मेरा। इस पे है इसे बोलता हूँ फोन। एनर्जी रिचार्ज, एचपी, डैमेज, डिफेंस। इस पे है एनर्जी रिचार्ज, 3-4 अभी चैनल का नाम क्या था? इन्फिनिक्स गेमिंग। वो तो है काइंड। इधर पर फोन किया है ना, इधर पर फोन आ रहा है इसलिए मैं चाह रहा हूँ। अच्छा, मेरी फील्ड पे आपकी सबसे फर्स्ट रील ऑफिशियल है। 5 यहाँ पे, 2 तो 4 5 6 यहाँ पे। हाँ अभी देख, फिर फेदर देख, ये देख। अब थोड़ा वेट कर, तेरे को दिखेंगे। बढ़िया है। बाकी तेरे को दिखेंगे, वो 5 तेरे को सिर्फ वैसे दिख रहे हैं। यहाँ से दिखते हैं ना ये जल्दी निकाल दो। हाँ? हाँ देख लिए। अच्छा यहाँ पे बहुत ज्यादा है भाई, मेरे को मिलते ही नहीं है। मैं लकी मैंने बेकार रेड है। किया ना, मैं वो कर रहा था, डंजन्स प्ले कर रहा था ना। डंजन्स में बहुत प्राइस लग मैंने गया कल मेरा। मैंने कल 4-5 डंजन क्लियर, मैं 6-7 डंजन क्लियर हाँ किया तो होगा। वो 6 मैंने 7 4-5 नहीं किए, मैंने 200 के करीब किए हैं। अच्छा 200 नहीं, सब मतलब कुछ है, 200 तभी मेरा राइजन लगता का इस्तेमाल लगभग किया मैंने, उसमें टेम्पर हो गया मेरा। है राइजन। मैंने 180 राइजन उड़ाए थे कल। 180 राइजन के एक बाद दिन का भाई, कितने थे? एक दिन का 200 था भाई। आएगा के साथ 200 लगा था। और अपना जो एक राइजन से पैसा मिलता है उस स्टन वाले से 60 मिलता है, तो 60 करके 10 लगा दिया। 10 × 60 600 है ना। 600 राइजन, 800 राइजन, 800 लगभग 1000 या 800 लग गया, पता नहीं इतना कुछ। उसके बाद टोटल 6 है 5 स्टार वाले। Final warning. मैं देखता कौन किस पे लगाना है ना। सीरियस सबसे गुड इस फाइट पर हुआ, होगा। काफी फायदा तो हुआ भाई इसको वेपन चलाने का। मैं भी पता है लिटरली 1 घंटा लगा के इसके लिए मैं वेपन लेके आया। लिटरली मैंने बिल्ड किया इसके लिए वेपन, मतलब क्राफ्ट किया, जो क्राफ्ट करते हैं ना वहाँ से ब्लैक स्मिथ पे, वहाँ से क्राफ्ट करा के लाया हूँ इसके लिए वेपन। नॉर्मली मैंने क्राफ्ट किया था वेपन। पता है इसके लिए मेरे हाँ मैं वेपन को अपग्रेड करेगा आज। टैलेंट लेवल 6 वेपन करना अपग्रेड करने जा है। रहा उसके हूँ। लिए जो डंजन चाहिए ना वो हाँ? खुला हुआ नहीं है मेरा। खोल लो। वेपन अपग्रेड कर रहा अपने कैरेक्टर, अपने ट्रैवलर और पर मैं क्या वेरिएबल करना में जा पड़ेगा रहा मेरे हूँ, को? कोई काम है तो बोल दे, करा देता हूँ। तो यार बॉस भाई ये गलत है यार। मार रुको, पाएगा ये गलत कर है। देगा मैं। रुको, ये गलत हो रहा है प्लीज। तू अलाउड हो जा भाई। ये डंजन अवेलेबल है मुझे। अच्छा आज ये वाला डंजन अवेलेबल है, इसका दिक्कत है। क्या हुआ? आज रेड करना डंजन वाला। मेरे को नॉर्मल का वेपन अपग्रेड करना है, इसलिए डंजन रेड करना पड़ेगा ये वाला। तो उस पे क्यों मटेरियल वेस्ट कर रहा है वेपन पे? तो किस पे करूं? वेपन कैसा है उन्होंने का? हाँ बढ़िया वाला है, बिल्ड करवाया था मैंने। वो क्राफ्ट क्या किया। है वो? हाँ पोस्टर है तो बिल्ड करने की सोच रहा हूँ। 70 लेवल का हो जाएगा तो अटैक बढ़ जाएगा इसका। कर ले, मेरे को इनवाइट कर, आता हूँ मैं।
उसमें कौन दो से वाले चाहिए बस। मॉन्स्टर्स आते हैं, कौन से टाइप के? देखना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग टीम लूंगा ना। मेरे पास वैसे भी तो पता है टीम अजीब गरीब एलिमेंट की है, मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता है एलिमेंट से। इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो के देखते हैं, इनवाइट कर। हाँ। किसी से मारूंगा, ये दोनों से The मारता हूँ। Special Security and Surveillance Patrol isn't involved in regular patrol duties अभी around इसका मतलब Fontaine. वो भी नहीं है। 80 लेवल के उसमें क्यों इनवाइट कर रहा है? लो लेवल का भी होता है वो। लो लेवल में चलना है। हाँ, लो लेवल में सेम मटेरियल मिल जाएगा तेरे को। ठीक, इस पे मिलेगा 59 वाले पे। हाँ, 59 वाले पे मिल जाएगा वो ना। वो सोच रहा 80 सुपर वाले लेवल पे का तो भाई औकात में नहीं रह रहा जाता, ये औकात से बाहर जा रहा है लौंडा। क्या लूं भाई? हो जाती है इलेक्ट्रो लेवल के का लिए तो लिए। तो क्या है? अच्छी लेवल पे डाल इजीली हो सकते जाता हैं। है, इतना टफ नहीं होता। छोड़, एक बार ट्राई करते हैं, हाँ, फेल रुको। होगा तो दोबारा लगा लेंगे। इलेक्ट्रो है ना, खेलने दे। देख ले, अपन दोनों के कैरेक्टर्स का लगभग सेम लेवल है, सिर्फ मेरे की का 3 लेवल से ज्यादा है, ध्यान रखना। बाकी सब सेम है। अरे चलता है, उड़ा ले। देखते इसमें तो वही आता है, मेरे को खेलने चाहिए होता है अपना फ्रीज करने के लिए ना। उसके बाद विंड अटैक सबसे बढ़िया लगता है। अच्छी पार्टी बनाओ जी, हैं। एक बार आने दो प्लीज। और बस ये मेरा वर्ल्ड है। अबे सलाइन Justice will prevail! बड़ी अरे बहुत टाइम है। 10 लाइन मारने हैं। मैं पहले बताया था, चलता है। Propagate! ओए Germinate! ओए, आगे वाला हिट कैसे कर गया? Stop right there! कर रहे हैं भाई। हाँ ऑब्वियसली करते हैं। Drop your weapons! You went for it! रुको, अब रुको। Not a twin blade! बहुत टाइम है, बोला तो। Scatter! अस्सी लेवल का ट्राई करेंगे ले। नहीं, 80 लेवल से नहीं करेंगे, पता है मेरे को। तो उस तरह का Justice will prevail! मैं लाऊंगा ना ग्रीटा, एक और लाऊंगा। वो पता है, मुझे डैमेज नहीं कर रहा क्योंकि उस पे इम्यूनिटी है तेरे। जब कोई डैमेज नहीं कर रहा है नहीं हो रहा है, हाँ, हो रहा है। यहाँ पे बराबर हो रहा है। एलिमेंट डैमेज कुछ नहीं है उधर। देखो दूर रहो, दूर रहो, थोड़ा दूर रहो। डैमेज होता है, एलिमेंट डैमेज नहीं होता। इसमें हो रहा है, उसपे नहीं हो रहा था। 1000 का हो रहा है। हाँ, इन पे होता है। नौवीं पर 500 कर हर एक 500 का। Scatter! कहाँ है भैया? आ जा भाई। Let me amuse As a good night chew. Germinate! you. Really know how to get me going. Needs assistance. Steady as stone. Stop right there. The barrier. नहीं वो और here we go। You went for it. Wind blade. नहीं करी। Let me amuse myself. Propagate! Look at me. किल चो साले स्टार्ट है मैच पूरा। 3 कंटिन्यू गेम था। ओए 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 फक हो गया, नहीं बच गया। हो गया था अभी। अभी लीव कर देता हूँ। यू नो आई विल वीकनेस। मैं नहीं गलती से उस पे क्लेम वो कर देता क्या बोलते हैं, तो बैठ गया। मुझे बाहर जाना नहीं आता क्यों? बढ़ मेरे गया। को चाहिए भी नहीं है मटेरियल। मैं क्लेम हो गया मेरा काम। उसके लिए। तो ही चाहिए था मेरे को, मिल गए। हो गया। हाँ और कुछ? अब देखता हूँ क्या क्या चाहिए, देखता हूँ क्या चाहिए। जो चाहिए था वो तो मिल गया ना अभी। एक चीज मिली और अब चाहिए था बड़ा कुछ। बेबी ये कौन सा है? जहाँ कुछ आया नहीं क्या? ऐसे मैं बंदे को बुलाऊंगा।
वेपन्स कौन से हैं इस तुम्हें तरह पता के? है अंडरग्राउंड वाला ओए एरिया है ना, जो अंडरग्राउंड माइन का एरिया है ना, वो कम पता है? अगेन। हाँ अंडरग्राउंड माइन वाला एरिया, हाँ वो मेरा ज्यादा नहीं बस 78% एक्सप्लोर हो गया है। हाँ तो जल्दी होता है। तेरा कितना कितना है? पता नहीं, देखना पड़ेगा। 80 करके 50 दिखा होती तू, है। 80 करके दिखा तब मारूंगा। कौन करे भाई यार साथ में, आप कैसे होगा, ऐसे कैसे करता है एक्सप्लोर ज्यादा? समझ नहीं आता एक्सप्लोरेशन का, एक्सप्लोर समझ ही करो, नहीं क्या आया अब तक। एडवेंचर करो, एडवेंचर एडवेंचर। एडवेंचर क्या करनी है भाई, मैं टेलीपोर्ट ही करता रहता हूँ। इनको मारने के लिए क्या क्या होगा? मेरे को तो रुको स्प्रेड मेरे को डैमेज इसको वाला ट्राई चाहिए जो करने स्प्रेड दो। डैमेज दे सके। बस ट्राई कर रहा हूँ, मर भी सकते हैं वैसे ट्राई करने के बाद, बट स्टिल अभी हो हु तो गिव्स गया अ तेरा, अब फक। क्यों स्टार्ट करवा रहा है? नहीं हुआ, एक और चाहिए, 3 चाहिए थे, 2 हुए। ये वाला तो अकेला अकेला कर सकता है, हाँ ये वाला। हाँ ठीक है। Springboard! Final warning! हो रहा है Scatter! Justice will prevail! Scatter! ट्राई करता Propagate! हूँ। Drop your weapons! अच्छी तरह से हो रहा है। Scatter! Springboard! Before I can see! Done. Save it final. Over here. ओके बेटी, तब तक मच जाएगी। ये बहुत लिया वैसे आपकी। पता नहीं वो Scatter! Propagate! Final warning! Blade! Prepare to be blown away! लेट्स गो। क्या हुआ? Drop your weapons! You really know how to get me going. Propagate! ये बाकी भी तरह एडवांस है इसकी वजह से। लीव कैसे करते हैं? मुझे लीव करना नहीं आता है यहाँ से। मैं नॉर्मल एग्जिट मार गेम दूंगा। कर ऐसे लीव दूंगा। क्लेम करता है ऑप्शन या फिर सबसे टॉप लेफ्ट में एक लीव का बटन होता है, हाँ तो पर एग्जिट क्लिक वहीं कर से लो। किया हूँ मैं। ये कर मेरे को आप मिले थे वैसे, बात हुई आपसे मेरी, मेरी आपसे बात हुई। मैं चैप्टर तभी 9 तक अनलॉक चलता कर है दिया जब से। एक्सपीरियंस का। ये झाड़ी मत दो, झाड़ी मत जाओ ना। चलो और लेवल 45 चलता है हो गया कृष्ण। अरे हम बहुत दूर के दराज झाड़ी में आ जाओ। मैं अपने वर्ल्ड में जाके वर्ल्ड लेवल इंक्रीज कर रहा हूँ वर्ल्ड का। अरे इधर आओ, पहले इधर आओ। मैं चला गया हूँ। झाड़ी में करना था। क्या वो दूर से कजन है, फर्क नहीं पड़ता। Add asterisk. योर एडवेंचर रैंक। 125 ओए। और मिले मेरे को वो। ओके अबे ये भी चाहिए मेरे को।
और मैं एक्सचेंज कर सकता हूँ 11 चाहिए ना। ये मेरे पे पैसा नहीं एक्सचेंज करना है वाह। ये पैसा नहीं है मेरे पता है पास वाह। मैं अपने चाहूँ तो मैं लोग को वो कर सकता हूँ, कॉन्स्टलेशन 2 कर सकता हूँ अभी, एक कॉन्स्टलेशन में 2 कर सकता हूँ अगर मैं 10 स्पिन तो और कर लो पर क्या करूँगा मैं, तो नहीं करूँगा। वाह। 10 दिन और करके मैं भी कर सकता हूँ, मैं नहीं करेगा हार में रही होगा। There's a strange wanderer in her building. उनका ना एक स्टैंडर्ड बना तो वो बड़े है ना, मैंने थोड़े से एक मिला है मेरे को और अभी 2 क्वेस्ट से और मिलेंगे। फिर क्यों पड़ेगी याद आया अपने ड्राइवर को भी अपग्रेड कर पाऊंगा ना, सही है। अच्छा इसको लेवल 30 पे अपग्रेड कर सकता हूँ। लेवल की हो गई। देखो अपने ये तो पूछ लो कोई टेस्ट हो बिल्कुल जब तक मैं स्टार्ट नहीं करने वाला अपन होगा। पहले कमिश्नर क्लेम कर मुझे देखा कमिश्नर का सबसे इजी होता है इतने भी सारी में जंपिंग करते साथ में कंप्लीट 100 डोमेन्स विद प्लेयर, मैंने 41 डोमेन्स कर लिए हैं किसी प्लेयर के साथ, 3 में 41 डोमेन कर चुका हूँ। 41 इंटू कर ले, हर एक डोमेन में 20 राइजिंग लगता है, 5 में 100 नहीं हाँ 100, 5 में 100, 10 में 200, पता नहीं कितना लगा। सोलो डोमेन भी है ना फिर, यो ब्लैकस्मिथ मल्टीप्लेयर में ओपनिंग किया मैंने। और ब्लैकस्मिथ कैसे बेच रहे थे बिल्कुल बेच रहे ये दोस्तों ये कुछ अच्छी है ऐसा कुछ है क्या टीम लेके जाऊंगा समझ नहीं आ रहा भाई। डंजन के लिए किधर जा रहे हो डंजन के लिए कौन सा पता नहीं कोई तो है, मैं अपनी पुरानी टीम लेके आता है एक बार। आर्कन कॉस्ट का वो तो पहले This will be interesting. लास्ट है जो मैं कुछ नहीं करता अपने नॉर्मल एंजॉय एक कमेंट वाले करता हूँ मेरे को फ्लावर वाला चाहिए इसमें से मिलेगा हम लोग सुबह पर ये है 80 लेवल है असिस्टेंट पे नहीं मिलेगा 50% पूरा खाता है मैं लेवल में कोई दुआ जाए भाई रो बंदा एंड डेंजरस की स्पेलिंग होती है 20,000 हो गए भाई, क्या सीन है इसके साथ, रोमिंग बोल के उसको करने बोलते तो मैं बोलता हूँ मेरे मजे के जल्दी जल्दी क्या कर रहा हूँ भाई, क्या है भाई। अब मैं नहीं करूंगा कट ये सारे काम कर लूंगा मैं डंडे में डूब के मर रहा हूँ बढ़िया सो प्रो मैं भी डूब के मरा था
अभी तो मैं डंजन में डूब के मारा था। आगे बढ़े। मैं भी मरा था अभी पिछले डंजन में, भूल गए। डूब के तो मरा था। Scatter! Cool it. 68 with the Open the one to go down very cool. मेरे को लग रहा है ऐसे हाल में तो मिल जाएगा तो अच्छा। No, my sword. Let's dance. क्या करूं? Content 30% में ज़्यादा में कितनी? बहुत कम। ये कौन सा फ्लोट? ये करूँगा मैं डिफॉल्ट and nothing content very चलो मैं करता हूँ। बाउंटी हंटर बनूंगा मैं। मुझे जिम्मेदारी। Spring forth. Scatter. नाम बाउंटी हंटर। Freeze. Time to act. दूसरी बाउंटी हंटर कहाँ पे है? Cool it. Germinate. अरे बाउंटी कहाँ पे मिलती है? Propagate. Dodge this. Propagate. Freeze. No, my sword. Scatter. I'll protect us. Dodge this. Propagate. Scatter. Spring forth. Oh, ready, steady, go! Don't get frostbite. Let me weave you a verse. Let's dance. Cool it. Rain outlines your fate. Propagate. Scatter. अच्छा लगता है। Dodge this. No, my sword. Freeze. Let the show begin. Dodge this. La 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 la. कहाँ पसंद है?
Let's dance. Let the show begin. हेलो ना Body and mind. Rain outlines your fate. Witness the power of... Spring forth! Oh, so sorry. Scatter! Propagate! Germinate! Cool it! Rain outlines your fate. Dodge this! Scatter! Propagate! Come on, we can do it. Time to act. Scatter! Don't get frostbite. Let me weave you a verse.
So sorry. Propagate! Dodge this! No, my sword! Witness the power of Fuhua! Scatter! Freeze! क्या रोबोट डैमेज ज्यादा कौन करता है? अगर डैमेज किससे करता है? रोबोट को वो फायर वाला है ना रोबोट तो आइस पे आइस और वाटर का टाइगर हो मेरे को 3 मिनट के अंदर वो होता है ना हाँ Body and mind. Time to act. right Treasure hunting. A valiant endeavor. you don't know if you will be able to do that or not so don't try that shit अबे यार चलो फिर से क्या करूँ Don't disappoint me. मेरा घूम चल रहा
Let's go. मारेगा पता नहीं किसकी बाउंड्री निकली अपनी होगी हो रहा है फ्रेंचर्स रेपुटेशन मैं तो नहीं और कचरा मिल रहा है तो आई डोंट थिंक इतना फायदा है तो I'm not going to go on नहीं नहीं नहीं
I think. Okay. Sorry. Let me check. अभी तो इसके लिए वाली क्या है? Don't waste my time. No, my sword! Rain outlines your fate. और जैसे Time to act. It's nothing. This one will be frozen.
Let me weave you a bow. Propagate! Scatter! Don't waste my time. Submit! Cool it! Rain outlines your fate. Give up. Scatter! Freeze! Yeah. Don't waste my time. Body and mind. Rain outlines your fate. Dodge this! Germinate! The victor has been decided. Rain cutter. Scatter! Cool it! Armed and ready. फिर अपने को भी चले गए क्या हुआ? बोरिंग बहुत हेलो अरे आई को घुमा रहा हूँ पूरा इधर पे इसके शहर में इसमें घुमा रहा हूँ Final warning. Stop right there.
Propagate! Dodge this! Cool it! Oh, so sorry. Witness the power of Gugwa. You asked for it! Scatter! Freeze! Rain outlines your fate. Scatter! Propagate! Drop your weapons! Dodge this! Final warning! Scatter! Freeze! Let me weave you a verse. Spring forward! Ha! This moment will be frozen. Justice will prevail! Stop right there! Cool it! Propagate! Scatter! Drop your weapons! Don't push your luck. Freeze! Terminate! Stop right there! You asked for Dodge this! Don't get frostbite. Rain outlines your fate. Drop your weapons! Stand down! Propagate!
Wind blade. Cool it. Freeze. Drop your weapons! Stop right there! Wind blade. Final warning! Dodge this. Hands where I can see them! Disappear. Stop right there! Cool it. Rain outlines your fate. Wind blade.
Dodge this! Final warning! No, my sword. Drop your weapons! Final warning! Wind blade! This moment will be frozen in time. Ring cutter. Justice will prevail! With the wind! Cool it! Drop your weapons! Freeze! No, my sword. Stop right there! Cool it! Disappear! Final warning! Ah, you had a choice. You asked for it! Wind blade! Dodge this! Don't get frostbite. बहुत स्लो पड़ रहा है पे टाइम लगेगा तो नहीं I'll take care of it. Hi.
people around anymore. Looks like that boat we took to Araneas might have been the last one. Vache. Looks like we're back here again. Huh? Traveler? Are you hearing voices again? Ugh. That's kinda spooky. Are you sure we don't want to come back in the morning? Vache? Vache. Hey, why are you still walking towards it? There might be something nasty in the water. यो 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 क्या कर रहे माइक ऑफ करके बैठा क्या हुआ क्या हुआ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नींद आ गई थी मेरे को। Huh? Hang on. Hey, traveler! Stop walking! Come on, wake up! कुछ मुझे पता है सोफी। गुड नाइट। सोने जा रहा था मेरे पास आया सोफी है ना। तो नींद आ रही बहुत जल्दी। Vache, are you my dear? No, wait. आधे घंटे बाद आ You रहा। seem to be someone गुड else. नाइट। Do you know Vache? Do you know where my love is? I'm. Wait. Who am I? My memories feel like they have been washed away like a flood. So many fragments dissolved amidst the tide, never to be recovered. How much have I lost? How many things that I once held dear while on land have I since forgotten? Yes, that is what I was once. But now, I am but the consciousness of one who is lost, therefore. I do not know how I came to be like this either. I only vaguely remember being covered in light blue water, and then all grew dim. I also remember going to many places. I loved adventure, loved exploring places of peril. No matter where I went, Vache would go with me. I knew how dearly he loved me. But now, we can no longer go back. No! Our reunion no longer has any meaning. There is no way for us to create any new memories. The thought of me gives him no succor. So let it lie forgotten beneath the waters. If you meet Vache, tell him not to look for me. Tell him to move on. Perhaps that is so. As I was submerged, if only I could have comforted him. Told him that I did not suffer. Indeed. Is that what you call it? Dissolving? If anything, I consider it a form of release.
It was a state of neither fear nor frenzy. I could also liken it to being a thirsty person who drinks water for the first time. I think I hear your companion. It's time for you to go, I think. Farewell, then. I am glad that you were able to sense my presence. Remember, if you see Vache, tell him not to seek me out any longer. Wake up! Come on, hurry! Navi is outnumbered! Demoiselle, look out! Dear God, it's a whole army of Gardamex. Chlorand? Quick, now's our chance! I should thank you for lending us your sword there, Chlorand. But before I do so, could you explain how you managed to show up here? I followed you. It seemed to me that danger has followed you more closely as of... I believe that following someone without their knowledge is actually called Mr. Callus's last wish was for me to ensure your safety, and I will not betray his trust. He would do the same. Do not speak of my father! Sorry, Demoiselle. I was not strong enough. Thank you for your aid, Miss Clorand, but do keep an eye out for your manner of speech. Sorry, I did not consider your feelings. Whatever. What else do you know? How did you come to the conclusion that I'd be in grave danger? I doubt I know much more than you. But I believe that the mastermind behind the serial disappearances is very powerful. Your performance tonight will almost certainly attract their attention. I'm sure they've known about me. And what about these Gardamex? I thought only those associated with the Maison Gardiennage could control them. None of these mecha have serial numbers. I was sure to check a moment ago. They are not the ones used by the authorities to enforce the law. I can only conclude that some powerful or wealthy party must have obtained them via illegal means, deploying them as a private force of sorts. What? Your point being that they're out of Spina di Rosula's league, then? Yes. Be careful, and do not act rashly. I will continue investigating no matter what. We will bring the truth to light. That's my father's true last wish. Regardless, thank you for your help today, Clorand. But if you get any ideas, tell me first. I do not think that they'll strike again anytime soon. Right. I suppose that's the best news we've gotten today. Demoiselle, I believe that... I know, I just... She's... Oh, thank goodness! Paimon thought we were done for! Those Gardamex came out of nowhere while you were unconscious, and Nadia and her gang saved us! Oh, and there was that champion duelist
save us too! We got lucky there. Paimon probably couldn't have fought them off otherwise. Oh, come now. Forget all that polite talk. That wasn't really a farewell meal we had back there. Not as such. We're still partners. There's no need to thank me. It will take 50 years for me to match Demoiselle's magnanimity. If it were me, I would have joined the Spina di Rosula on account of her goodwill long ago. All right, you two. That's... Actually, Navia, how did you know that we were in danger? You... Well, to be honest, you're the one who tipped us off, Paimon. Huh? Really? Paimon contributed somehow? Ooh, Paimon's even more amazing than she thought! Yes, all thanks to you grabbing my drink by mistake. How did that help? After we parted ways, I was on the way back to one of our bases when I suddenly thought of what you said. That the Fanta tasted kind of salty and icky. Fanta only comes in sweet flavors. So how could it have tasted salty? The color of the drink, if I recall, had also been a bit off. So the Fanta had been spiked with water from the primordial sea? Yes. So if you hadn't drunk that cup for me... Spina di Rosula is preparing the grandest of awards for you as we speak for saving the boss. Huh. Really? हाँ अच्छा है वो थोड़ा लाइट आ रहा है ठीक है ओए ओए I sent people to Hotel de Boer to investigate. That's when I figured out that you... What? Well, speaking of which... Well, it can't be a Oh, Yes. and this time Paimon heard it too! But does that mean the primordial seawater raises someone's sense of... That doesn't sound like too much of a bad thing, to be It's not honest. New intel? While you were out cold? Well, let's hear it, shall we? Let's go. Oh. Vache. That name doesn't ring a bell. I suppose he hasn't stepped forward as a witness in court lately. Since he saw that young woman dissolve, he was at least at the crime scene. But he never gave testimony or any information regarding people dissolving in the primordial seawater. Could he have been threatened? मेरे को जाएगा Yes, thank you. This is very important information indeed. We will continue to investigate. Oh, you mean you'll help us investigate? Well, you did say that our farewell meal didn't really count. That means we're still partners, right? And besides, we're in this now whether we like it or not. You're not gonna let those people who targeted us get off the hook so easily, are you, Traveler? Demoiselle, do try not to look quite so pleased. You talk too much. Well, in that case, let's head back to one of our bases, shall we? I'll arrange accommodations for you. We also have some plans to go over, and hopefully we can deepen our bonds as partners. But we'll take that one step at a time, I guess. Don't worry, you two. With us around, our base is definitely secure.
उसका नाम क्या बोलते हैं? कि वो आर्कॉन नहीं है, ह्यूमन है, पूरी ना अपनी। आप कौन सा कर रहे हो? और 6 करना पड़ेगा शायद, 6-7। हाँ, क्या बोल रहे हो? समझ नहीं आया मेरे को। 5। रुको, अभी बात जल्दी स्किप हो जाए। हाँ हाँ हाँ, करो। गेम स्टोरी है, बस आप कंफ्यूज हो रहे हो। प्रिजन में भेज दिया होगा, प्रिजन में डाल दिया होगा। The musket is my favorite weapon. It's both powerful and threatening. Sometimes the latter trait is far more useful. थोड़ा ये सुना क्या बोल स्टोरी कस्ट कर रहा था अभी तो, मजा आ रहा है। It's right up ahead, but let's make sure we weren't followed first. I've been keeping watch, Demoiselle. I haven't spotted anyone suspicious thus far. Huh, very good. But let's not let our guard down for हाँ, कर रहा now. हूँ सुनो। I shall find rooms for our respected guests. इसके कर रहा हूँ। Thank you, Malus. Now, let's continue, traveler. हाँ, तो मेरा क्वेस्ट रिकमेंड कर रही है आगे। फ्लावर रिस्पेंडमेंट ऑन सन्स गॉडेस रोजना, नेचर एंड न्यू एडवेंचर। This is your base? अब स्ट्रीम ऑन है अभी। It's not quite what Paimon imagined. Your accommodations I have been understand you. arranged. Under the present circumstances, I can confidently say it's the best we have. हाँ तो किया मैंने वाला। Well, our funds have been a little tight lately. After all, we don't. Seems like it's tough. हाँ किया ये नेविया साथ में। Demoiselle, if you'll allow me. And no. My father's name is Callus. 3 years ago. Oh no. But I do not believe at the time. But strangely, that even after being serious, how could he protect his honor if he's dead? नाम बताना इसका मेरे को। If anything, the closest piece of info I have. Ah, so That's right. However, ये पे दिखा देना इसका। I must know what real. If only he'd been more open with me when he was still alive. He even hid the fact, and now here I am investigating his death. You really are a handful, aren't you, Papa? Demoiselle, please. If there... I also will never believe that Master Callus murdered anyone. Master Callus did so much. Even our supporters decreased greatly due to... wait. If Callus was such a good... No. Perhaps people just revel. People love watching the evil. But how could... never... There is one... Oh. Her? Well, yeah. That's not... Miss Cloran. She knew Master Callus before... There was... It's not that I don't understand her. Don't worry, Navi.
coffee. Afterward, Miss Cloran told us that at the start of the I duel, hope she gets some Master better. Callis... Yes, that is our... Oh, Papa. All right. Anyway, that's the information I wanted. Thanks. Please, relax and get some sleep. स्ट्रीम पे देख लूंगा। भाई चल रही है स्ट्रीम। अच्छा लाइक द फ्रेम। अच्छा एक्ट 2 पे हो ना अभी, टाइम लगेगा अभी। इसके बाद 4 और एक्ट हैं। हाँ कर रखा है। Where did the other two go? I sent them back to Poisson. It's Spina de Rosula's place of पहले तो origin, मेरा था। and where we have our headquarters. पहले रहता क्यों आया कमरे से? No, I just returned after going out for a while. Wait. बड़ी जेड़ा तुम्हारा। Unfortunately, this name seems से to have जुड़े been what नहीं है I ना? suspect that the no. पूरी तरह नहीं। And that is the archives kept by if the So Nervalette. In that case, भाई कितने पुराने जमाने में। आई मुझे समझ नहीं आता वैसे। The palais is right up ahead. Wow. Come on. हाँ? 6 4-5 घंटे लगे थे। Halt! Please state your business here. The Chief Justice is presently occupied with a Hey, don't you recognize us? Huh? Who are you? Just to be clear, I don't... See? Yep. If you're here just to No. Oh, yeah. We're here today. Of course. All right, then. I'll let you through. The Chief... Thank... भाई मैं बहुत हैरान हूँ। आई ने फटाफट फोटो ले। Please come in. ब्रो मैंने इसको गिरते ही हरकत की ना, गालियाँ ना पड़े मेरे को आई से। Sorry to barge in, monsieur. It's all right. You're looking for a man. Ah, I see. Who knew that Nervalette would be so easy to talk? Unfortunately, I'm quite certain that no one by the name of Vache has been involved in any case. There are no records of him either in the files or in my memory. Traveler, what if it was really just a dream? Is that so? All right, then. Thank you so much, Monsieur Neuvillette. We'll... Ahem. Miss Navia, I can understand how you feel. Your father, Callis, was a truly exceptional man. We deeply regret his passing. And what are you trying to say? Monsieur, are you trying to console me? Extend your... No. You are not trying to do any of that. I can hear it in your voice. There's no emotion behind your words. You... It's just like last time. After my father took his place in the duelist ring, I pushed through the guards to talk to you as a last resort.
You even told me then that you thought there was something fishy with the case, yet you still allowed the duel to go ahead. In your eyes, the value of a human life is nothing compared. If you truly regret my father's death, why didn't you give me the power to stop him from everything? Was hate? There are still. If you really have no heart, then just look me in the eyes. I, Navia, will show you the true meaning of regret. I'm sorry, Miss Navia. You and my father are truly alike. You keep all kinds of things in your heart and never say a word to anyone. It's not so much that you can't feel, but that you would never express anything. Oh well. In any case, everyone already knows full well the apathy of the Chief Justice. My apologies for taking my emotions out on you, Monsieur Chief Justice. Let's go, Traveler and Paimon. Navia, I'm fine. you're right. Wasn't it still sunny when we went into the building? And there shouldn't be any active trials? Now that I think of it, on the day my father was convicted of murder, it was also raining. What is it? Did you think of something? Yeah, he was outside. It was uncovered and the rain could fall there. That thought has occurred to us before. We've even expanded the search area to try to account for that, but didn't find anything of value. Oh? Wait. You don't mean... So you're saying that the true murderer could have been turned into water and then got washed away with the rain? Yeah. And if that's what had happened, then no one would have believed your dad, even if he explained what he saw to the authorities. I really think I found a true genius for a partner. All right, let's go to Poisson. With this new lead... Yeah, we're gonna make progress for sure this time. Do you want to go with me now? Or do you want to head over by yourself later? Great. Let's... Please, I will use करने को. Let's go. Let's go, baby. Bro, अब मजा आ रहा है. इसे बोलते हैं. राइडन सोगन दे मेरे को यूज करने को. Whoa, what a huge ship! What? There's no need. My father was the one who left. A gigantic and glamorous ship embodies discovery, opportunity, ambition, and conquest. It symbolizes Spina di Rosula's bright and limitless future. And Paimon thought you were bluffing when you said Spina di Rosula had a glorious past. Paimon was confused why a group with such a history would live in the sewers. But now that Paimon has seen this ship for herself, she's been convinced. Well, Poisson is where Spina di Rosula began, after all. It's our main base. भाई ये चाहिए मेरे को. अकेले तुम पागल बोल रहे हैं. देखना. अब कहाँ से देखते हैं? 5-star वेपन है. 17 लेवल का. सारे 5-star में 16 लेवल के. Maloose, we're back.
Apologies for the way. Constellations You नहीं है said वैसे, before that you still had. और talent art You still remember? Yes, the case was quite similar to. Could you tell us a... Yeah, Max of course. Many years at a glance. Wait! Yes, he did. If you drink Okay. synth for an... And if you were to stop, as he oversaw... Boss is uncompromising. Not only that, Yes. Recognizing that. The man's name was Jacques that night. But then... Sounds just like Lenny. Looking back on it, though, I now believe precisely. But, considering it now, it's... You're right. Jacques was an empath. I think that, on that note, however, our opponent, even though there is no need. If that's indeed what he wished for, was Yeah? I not the closest person to him? What was the point of him dying without sharing any of the secrets he knew? Synth is still here. Callus the Unfaithful. Did he think I've never accepted that? I want to find... Navia. This is indeed the. So you do know something else, Malus. Yes, I do. But what drove all the tensions? What? Boss also didn't tell you that he and the serial 5 years knowing all of. But as long as you remain, if something were to happen, as we've seen, bosses. No. This I is don't academic believe series it. बारे में. He never appeared to look... No father wants their daughter to see them weak and haggard, especially someone as proud as Boss. To him, dying in a duel and suffering lasting dishonor as the unfaithful was still far preferable than losing. So he chose... I'm afraid you're not understanding that if bosses, I'm sure. No. Is that the amount of confidence he had in me? And what if I was never able to make it to where I am now? Yeah. I suppose, but thankfully, he rarely talked to me about complex matters, and thus understood little of me as a person. Huh. Malus, what was the key It's the location when he was. I'm not But lose if you want, Why? you mustn't forget that we're fighting against. There's no telling, but a single. The worst case. Then, Well, you saw. But things... you sound like you've put a lot of thought into this, Malus. I am the butler, after all. I live but to serve the boss and Demoiselle's will. I've always been willing to take on any kind of risk for your sake. But considering my relative lack of ability, I've spent my time keeping... Thank you for all of that, Malus. Let me think. When I announced all... If the vendors didn't... After several... The first is... Huh? Yes, surprise. Thanks to his... There's someone else like him, too. जनरली वाला स्प्रे यूज करती है ये. It's a guild in Poisson. In the beginning... So, Yes, it's a bit different. The final suspect is Thierry, the man responsible for coordinating information between Spina de... Although the guard, since Thierry is all... I see. To think that the... If you want to invent... Of course. You're too... And before I forget, proving bosses after that incident, if it might help you... aw, thank you so much. A new case awaits, my dear partner. I hope we can work together to Oi, eu gosto de ver. मेरे पास आ जाए एक बार. राइडर सोम जल्दी के पास आ. तो कितना डैमेज देती है भाई ये सोम नहीं. Baby throat. It is settled, then. Please excuse me, and enjoy your conversation. Thank you for arranging everything for us, Mal- Excuse me, miss. Do you need anything from us? Oh, Hey, Navia's all quiet. This isn't like her at all. I'm sorry that I only That's came all to right, visit that's after all this maybe. time. After what happened, I didn't know how I was supposed to face the two of you. Ah, if it's about that, there's no need to apologize. After my husband died, Spina di Rosula sent us a lot of mora and support. I understood your guilt and apology to be genuine. But
aren't all of those things nothing compared to the loss of Completed? Jacques? इतनी जल्दी? You don't understand at all. I didn't know how to जल्दी face दिया। you. Because I didn't know what I could possibly bring as a consolation gift. थोड़ा सा शगुन थोड़ा I खाना know. खाना। और I'm कौन सी sorry. खाने गई? On the matter regarding my husband, Would you mind sharing it with शगुन को me? खाना खिलाना। I always knew that my husband's money was earned through others' suffering. He told me countless times that if he could turn back the clock, he would never go into the synth business again. He had many regrets. And so when Mr. Cal, he tried to be as careful. They found out about his betrayal? Papa didn't say that exactly. But Papa did tell me that I should never be ungrateful. Before he left that day, he told me that he had no choice. It was only later that I realized it was his final farewell to the two of us. I don't know that for sure. Which is why I'm the one who should feel guilty. Even if... But Mama, Papa always... Well, Yeah. then you should hold up regardless. Oh. Thank you. Thank you. Even though your personality is quite different from your father's, your determination when you speak is really similar. You really think so? That's the first time anyone said that to me. Are you okay, Navia? I'm fine. Don't worry. Let's investigate the 3 suspects next. Florence should be nearby, and we should be able to find Thierry and Uncle Marcel in the city. भाई मैंने किया है ना। I'll get myself Ready together now. on the way. So, please... Greetings, boss. How may I be of assistance today? I'm sure you've heard about what happened at the Opera House? Someone got turned into water right in front of us. Yeah, I've heard. It also reminded me, on the day that the incident happened with my father, it was raining outside. After my partner here put the dots together for me, I feel like we should try to reopen his case. Can you do me a favor and try to recall what happened that night? Let me think. Mr. Callis was feeling pretty upbeat that day. So he was drinking and bantering away with us at the table. After that, he told us that he wanted to go get my first react, but when I got... So you also... Indeed. Reason being, but according to... About the clothes left at the scene that you mentioned. Do you think there was a third person there who was turned into water? At least from our perspective, the gun he was holding... Yeah, but hold on. He didn't even want to face the Oratrice machine. And did he lose all faith in the courts after seeing someone dissolve right in front of his eyes? About that, Malus told me a thing or two. So, I think I can understand why he committed... I'll tell you everything, once the whole truth has been revealed. I understand. And if I may just... Many people have... But it was Mr... No matter what... Don't worry. You and all... भाई ये लिटरली बोल रही है। भाई मेरे को ढोल बजा रहा था वो क्वेश्चन बन जाएगा। तब से मुझे गई है। Hey, Thierry, it's me. Oh, now, what brings you here, Miss Navia? I've heard that you made quite the name for yourself at the Opera House. Oh, so you've caught news of that already. Oh, okay. Hey, I'm also a member of the guards, you know. The way you make it sound, people would think I was sent off to Poisson because I had done something wrong. Are you sure there isn't a little bit of truth in that? Under normal circumstances, shouldn't you have been called back to the city already? I mean, where I work is really up to me. Let's just say I enjoy the ambiance of Poisson. Callis did a fantastic job running the town, building Spina di Rosula from the ground up and clearing many obstructions in my way.
It would be next to impossible for me to find a similarly easy but high-paying job in the city. Anyway, enough chit-chat. Are these two friends of yours? You, here for some formal business? Yes. These two are my partners. What happened at the Opera House made us realize that Linny's case and my father's may be related. We're trying to reinvestigate the details of my father's old case. Ah, I get it. You think there might be more to the case now that we know people can be dissolved into water, right? I was also flabbergasted when I first heard of it. If you want to go through the original files from your father's case, I can help you look for them. That'd be much appreciated. Thank you. Actually, I have another question. Do you have the authority to dispatch Gardamex? Of course. Without them, I couldn't possibly handle Poisson on my own. Why do you ask? We definitely can't use them to forcefully get more evidence for your father's case. Well, you see, just recently, we were attacked by a horde of unnumbered Gardamex in the city. So, if you hypothetically wanted to do something against me, all you would need to do is get rid of the mecha serial numbers and send them after me. Then you think too highly of my abilities. Dispatching mecha is very different from controlling them. If I had to make an analogy, when you order a dish, the chef will make it for you. You can ask the chef to cook, but not to massage your shoulders or carry your baggage. If you try to make unreasonable demands, the chef would just think you're out of your mind and ignore you completely. The same goes for me and my Gardamex. Removing a serial number is also not as easy as you might think. There are a lot of complex steps to it, and it's almost impossible to keep it a secret. So I can promise you, those mecha were definitely private units. They're certainly not cheap. So, whoever their owner is must be super rich, powerful, or both. Now that you mention it, though, being in the synth business would definitely be profitable enough to afford this. Oh, then you're officially in the clear, Thierry. Oh, thank you for the vote of confidence, Navia. Jokes aside, I'd like to wish you all the best with your investigation. I'll be staying in the city for a little while, so just come find me if you need any support from the guards. ये किसे सच में ले जा सकते हो भाई किसे सच में ले बट घूम मिलो और बंदे में कन्वर्ट पेज बस हो गया था बढ़िया Yo. Hello. How may I help you? I'm here to see Marcel. Could you please let him know? You can just say Navia's looking for him. Sure. I will let him know right away. Navia, hello. Sorry to keep you waiting. I'm not as young as I used to be, so my legs are giving out a bit. Oh, it's all right, Uncle Marcel. There's no need to stress. I just wanted to talk to you briefly about what happened at the Opera House. I'm sure you saw everything too, right? Yes, I've never seen anything so strange. Oh, you were at the Opera House too? That's right. I went there with Navia to see the magic show.